Okay, now we have this question. We have these three groups of identical objects. In first group we have p identical objects or things of one kind. In second group we have q identical things of another kind, and in third group we have r identical things of third kind. We have total p plus q plus r objects. We cannot merge all these objects. We can merge only when all the objects are identical or all the objects are distinct. So after merging the objects or merging the groups, we have either all the objects identical or all the objects distinct. Okay. But here we have identical objects of one kind, of another kind, and of third kind. We cannot merge the groups. Okay. हम उसको वैसे ही रखेंगे. Now first question, selection of 0 or more objects from all the objects. We have to find the number of ways. Okay. Now if we select 0 or more objects from all the objects, it may happen that no object is selected from this group. It may happen that no object is selected from this group, or no object is selected from this group. हो सकता है ये, ठीक है ना? So we calculate possibilities, number of ways of selection for each group. Now we may select either 0 object or 1 object or 2 objects or all p objects from first group. So for first group, number of possibilities are p plus 1, because we have 1 plus 1 plus 1 occurring p plus 1 times, because we are considering 0 selection also. What about second group? Number of possible ways of selecting 0 or more objects from this group is q plus 1. Here we multiply, because this is number of ways of selection of 0 or more objects from first group, and means we multiply number of ways of selection of 0 or more objects from this second group. ठीक है ना? Multiply by, for this group we have number of ways r plus 1. So total number of ways is p plus 1 multiply by q plus 1 multiply by r plus 1. We multiply all possible selection possibilities for each group. ठीक है? Okay, now in second question we have selection of at least one object from all the objects. इन सभी objects में से हमें at least एक object select करना है. ठीक है? Then what will be number of ways? Number of ways will be p plus 1, q plus 1, r plus 1 minus 1. Okay. Why it is so? Because when we select at least one object from all the groups, it may happen that we select only one object from all the objects, and that selected one object may belong to either this group or this group or this group. So we may have 0 selection from any of these three groups. ठीक है ना? हो सकता है ना 0 selection. यहाँ से कुछ नहीं select हुआ, यहाँ से कुछ नहीं select हुआ, यहाँ से भी कुछ नहीं select हुआ, और एक object जो है वो यहाँ से select हो गया. So for each group we consider all possible selections which include 0 selection also. तो फर्स्ट ग्रुप के लिए 0 सिलेक्शन के साथ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस के वेज p प्लस 1 हो जाएंगे, सेकेंड ग्रुप के लिए q प्लस 1, थर्ड ग्रुप के लिए r प्लस 1. बट इन दिस नंबर ऑफ वेज there is one way in which no object is selected from any of these three groups. एक केस ऐसा होगा जब इन तीनों ग्रुप्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? -1. ठीक है ना? उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. ठीक है? नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप. हर एक ग्रुप में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए. सो हियर मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड इज 3. ओके, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. We have to select 3 or more objects with the condition that from each group at least one object is selected. So we calculate all possible selections for each group without
जीरो सिलेक्शन, ठीक है, जीरो सिलेक्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे? How many ways we can select one or more objects from first group? We can select in p ways because we have 1 plus 1 plus 1 occurring p times. For second group we have number of ways q, and for third group we have number of ways r. So total number of ways is p multiplied by q multiplied by r. यहाँ पे कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। Okay. Now we have fourth question. Selection of at least one object from first group. फर्स्ट ग्रुप से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। इन दोनों ग्रुप से कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड वी कैन सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस टू ग्रुप्स। सो फॉर फर्स्ट ग्रुप number of ways is p because zero selection is not included. For second group number of ways is q plus 1 because here we include zero selection, and for third group number of ways is r plus 1 because here also we are including zero selection. Okay, so this is required number of ways of selection. तो होप आपको यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेज समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।